Okay, Khushi, explain about your articleship experience and about yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you for hearing me out. I have been looking forward to speak about my articleship. I did my 15 months training from an industry uh, on which a major part of my internship has been in financial reporting. I did POs. I make invoices with and without POs, and I make general entries, ledgers, I make vendor aging reports, debtor management system, and I also handled many inventories, and I also managed a project that is known as MPLS. It's a government based project. It is worth of 20 crores, and I have to give reports to the seniors management on that project. Okay, what were your significant contribution during your articleship? As I have told you, I has been working in a MPLS project. I was the accounts head of that project. I have to manage all the records and all the records of the vendors. What time we have to give payments to those vendors. If there is a delay, we have to give interest on the delays. I have to check all these. Okay, what is MPLS? MPLS stands for multi-protocol label switching. It's a government project. In this project, we have to place routers and we have to install routers on different government schools and colleges across Rajasthan. Okay. So, during your articleship, you did work related to the FR as well. So, what is the criteria for recognizing a receipt as revenue, as per Ind AS 115? Uh, there are 5 different criteria on which we can recognize revenue. Uh, for example, we if we receive revenue at one point of time, and we have to give our services at only a one point of time, then we have to record revenues at a point of time only. In other case, in case of services, we have to give services at a particular point of time or on a recurring basis. Then we can record revenue on different type of basis according to performance obligation. Are you sure you have given the right answer? Uh, I don't have mentioned all the 5 criteria, Yeah. but I know how to measure the revenues. Okay. You also did the preparation of cost statement as well. Yes, sir. So, just tell me what is who is required to maintain cost records. Um, Cost records is maintained under Rule 3, and the company whose turnover is exceeding 35 crores is required to maintain cost records. Okay. So, any immunity from Rule 3 to any company? Uh, Companies whose export is only from who is exporting doesn't have to maintain records, and medium size small and medium enterprise doesn't have to maintain cost records. Are you sure? Is there any criteria for the export? Only export is written over there, anywhere. Sir, if export is from sales, if we export, no sir, there is no criteria to export. Okay. And small and medium is written over there? Yes sir, only small and medium is written. Are you sure? Not 100%. So, what is the difference between a small and medium enterprise? And what is micro enterprise then? Small and medium enterprises is differentiated by its turnover. Right now, I am not able to recall the exact turnover
And I'm Okay. sorry, I have mentioned small and medium, but micro and small is not micro and small do not require to maintain cost records. Okay. Any specific provision for MSMEs under income tax? Which was recently added. Sorry, sir, I'm not able to recall. Okay. Okay, just tell me about the reversal of credit under GST. Sir, Suppose we have purchased an asset of rupees 5 lakh and we used it for the 2 years, then it is sold for rupees 3 lakh. Then what will be the amount of reversal? the Yes. you have taken the ITC, Yeah, we have taken. the amount of ITC you have taken is can be reversed back. Are you sure this is only the provision? Is there any specific section for that? Sorry, sir, I can tell Okay, you. not an issue. As you are a cost accountant and you have prepared cost statements as well, so just tell me the difference between BEP point and indifference point. Break-even point is that point uh, where our cost is equals to our profits. Yes. Uh, there is no extra profits we are occurring rather than our cost, and indifference point is How we can calculate BEP point? sales minus variable cost minus fixed cost. Then profit is being obtained. Okay, you need to work upon that. Uh, my last question to you. You also prepared bank reconciliation Yes, sir. statement. Tell me any 4 reasons due to which differences occur. Um, for example, if my bank has, if I have made accounting entries on my books, and if the bank has not made the statements on the bank statements, then there will be a difference. If there is any interest received from bank, and bank has made the interest payments on the bank statement, and whereas we have not mentioned on our books of entries, then there will be a difference. And if we had made the payments through banks, but but the bank hasn't make the entries in its bank statement, then also there will be a difference. And if there is a difference in making payments, and maybe there will be a technical issues from bank side, and we have made the payments, then also there will be a difference. Okay. Okay, Khushi. Can you tell me 3 good things about yourself? uh, I'm a multitasker. I enjoy taking responsibilities, and I'm self-motivated. Okay. And you have mentioned and you are much interested in yoga and you have done many certificate courses. Yes. So can you tell me how many steps in there in Surya Namaskar? There are 12 steps in Surya Namaskar. I also won NIRC Yoga Challenge in Surya Namaskar. Why do you want to work for our company? Uh, Because we have another candidate which have similar qualification. So why do you want to our company? Why do you want to work for our company and why should we hire you?
As my skill set is matched with a job description, I am also a multitasker. During my internship, I also manage multitask at the same time. So in your company also, I can able to manage and handle different tasks at the same time, and I simultaneously I can also learn from your company, and I can perform best and give and able to be in the company's success. And you have shortlisting in other company as well. So my question is that why should I hire you? Yeah, why you want to work for our company? Uh, You can target any manufacturing okay. company. And Your for example, your company is a FMCG company. Uh, your company is a FMCG company, and it is growing day by day, and it's been from very long, and it's been the major player in the FMCG industry. So I also wanted to work and gain much more experience and expertise my field, and able to manage my skills, and maybe I will able to be on a managerial position at after some point of time, because I have the ability to learn, understand, and to do much more things at the same time. Okay. are you comfortable in working with night shift or remote area? Because being a manufacturing company, we have more sites in our remote area. So Yes, I'm comfortable in. okay, Khushi. Kushi, you have an articleship experience regarding recording and checking of accounting entries. Yes, sir. So, if goods are sold on approval basis and goods are not approved, then what is the accounting treatment at the end of the financial year? Uh, if goods are sent on approval basis, and within 6 months we have not received the approvals, and we have to make the entries. Uh, goods sent on approval basis. If goods are lost by fire, then what is the accounting treatment? Loss by theft to goods. Loss by theft by debit to Goods. गुड्स की कभी एंट्री होती नहीं है. What is the general entry for unearned income? Unearned income. Unearned income account, debit to income. Unearned income is asset or liability? It's an asset. Asset. What is general entry for accrued income? Accrued income account, debit to income. Accrued income is an asset or liability? It's an asset. Unearned income is also asset. Accrued income is also asset. Okay. What is difference between cash flow statement and fund flow statement? In cash flow statements, uh, whenever there is any cash flows, or for example we have purchased the asset, or we have issue some shares or preference shares, debentures, then there will be a cash flows. And in fund flows, uh, there can also be uh, cash treatments other than cash treatments also. What is difference between cash and fund? Cash is basically what we are receiving and what we are giving. Fund is basically what we are taking only. Okay. Why we calculate turnover ratios? Turnover ratios are measured so that we can get to know how much assets are there in our company to meet the current liabilities or debts of the company. Okay. Why is debt financing is beneficial over the equity financing?
because in debt financing we can able to on debt financing we can able to we have to give interest, and it can be it can be reduced from our profit if it's uh, what is the word, we can reduce it out from our profits. We don't have to give tax on interest. Explain the term internal rate of return. Internal rate of return is that return on which our company, it is a rate on which our company is able to manage our, on which our company is able to manage our profits. Uh, at what rate our company is maintaining its profit or raising its profits. Okay. Hello, Khushi. So, I would like to ask you, can you tell me how many types of meetings we have in a company? There are different meetings. First is general meeting, board meeting, and Only two. What if any other stakeholder of the company wishes to convene a meeting or discuss something with the company? Don't we have any option for them on that as well? they can come only in Gen. general. Okay. So, tell me what is the due date for convening AGM, annual general meeting? Um, 180 days from the end of financial year. Are you sure? Okay, is there any like maximum limit between the two meetings, the date between two meetings, like months or something? The dates should not exceed 180 days. No, I'm asking the maximum gap that can be there between two AGMs. Like if we are convening one AGM like today. So what was the like time period at which the last meeting was convened last year? So is there any gap? Yes, ma'am. I guess it is 180 days. I'm not sure. Okay. Can we file for an extension for AGM? Yes, ma'am. Okay. Who will be the authority who will grant such extension? Um, if a committee has, if a company has mentioned any uh, director who is going to have it, and CS also. No, the approving authority. Okay, like we are going to grant extension. So which authority will grant approval for the same? Company will be filing for the extension. Authority with whom we are filing for the extension. ROC. Sure. Or NCLT. ROC. Okay. Okay, now tell me, is there any adjudicating authority while we are filing for insolvency of a company? IBC. Insolvency. Adjudicating authority. The authority with whom the application under IBC is filed. NCLT. Okay, is there only one authority? Like if we are to file insolvency for a partnership firm or an individual, so will that application will also be dealt with by NCLT only? Or there is any other authority for the same? Adjudicating authority is also. Adjudicating authority is the main authority under which NCLT is covered. Any other authority with which we are going to file an application if we are a partnership firm or a proprietorship or an individual basically. Sorry, I'm not able to recall. Okay. Okay, thank you. Okay, Khushi, you have written evaluated purchase order rejection and approval. Yes, sir. So, on what basis you used to approve or reject purchase orders? For example, before making POs, we have to make agreements from our vendors. For example, if a vendor gave invoice to us and there is a difference in the price or the quantity, we have to check the from contracts what the price and quantity we have mutually decided, and they have to give in the price and quantity in that invoice only. That Okay. I have been checked. Okay, when we are making payment to this contractor, Yes. so what are the consequences under income tax? We have to deduct tax, Yes. TDS, and
We have to deduct TDS. TDS, okay. What percentage, how much? Under this, under 194J, sorry, Okay. 194C, if we are making a contract with the companies, we have to deduct TDS of 2%, and if other than company, then we have to deduct TDS at the rate 1%. Are you sure you have spoke right provision? Or right section? You spoke 194J once 194C, and then you sorry, spoke sorry, 194C. 194C. Okay. 194J is for professionals. Yes, yes. Okay. थैंक यू वेरी मच खुशी. चलिए बात करते हैं आपके फीडबैक पार्ट के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक से. तो अबाउट योर सेल्फ आपका ठीक था, उसमें सच कोई इशू नहीं है. उस टाइम तक आप कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल पार्ट आता है, तो जैसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो ये आपके फेस पर विजिबल है, और तो ये चीज़ आपको नहीं दिखने देनी है. पहली चीज़ यू नीड टू मैनेज. देखिए आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो यू नीड टू स्पीक दैट सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ बट आई विल श्योरली वर्क अपॉन इट. बट आप रुक जाते हैं तो वो गलत है. आपको रुकना नहीं है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देना है ताकि इंटरव्यूअर को पता चल पाए कि एक्चुअल में आप आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो और आप बिना परमिशन के सोचने लग जाते हैं. अगर आपको टाइम चाहिए तो यू नीड टू आस्क टू द इंटरव्यूअर मे आई टेक 1 मिनट 30 सेकेंड्स. तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी है. जब आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो ये आपकी वॉइस में भी विजिबल हो जाती है, और आपकी वॉइस और आपकी टोन, आपकी पिच उसी अकॉर्डिंगली फियर वाली हो जाती है. तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है. रेवेन्यू रिकग्निशन की कुछ कंडीशन मैंने पूछी तो आपने 1-2 बताई, वो ठीक थी, बट आपने सारी नहीं बताई, उस पर करना है. कॉस्ट रिकॉर्ड या स्टेप बाय स्टेप. कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस के बारे में आपसे पूछा था, तो रूल 3 आपने सही बताया, बट उसके बाद स्मॉल और माइक्रो वाला आपने ठीक नहीं बताया, तो आपने मीडियम बोल दिया था उसमें. ठीक है. और फिर आपने सेज बोल दिया था जो कि रूल 4 में है एक्चुअल में, एक्सपोर्ट वाला. रूल 3 में ऐसा कुछ प्रोविज़न ही नहीं है, तो वो आपने रूल 4 का बोल दिया था. MSME 43B में प्रोविज़न है, पेड बेसिस पर अलाउ होंगे एक्सपेंसेस. ये मैंने पूछा था, आपने ये नहीं बताया. इनकम टैक्स में क्या प्रोविज़न आया है MSME को लेकर के, तो ये आपको ध्यान रखना है. स्मॉल और माइक्रो के लिए 15 डेज़ का प्रोविज़न है और 45 डेज़ तक जो जा सकता है. ITC रिवर्सल सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 है, 5% पर क्वार्टर का रिडक्शन, और सेल वैल्यू पर जो GST बनता है विच एवर इज़ हायर, यू नीड टू रिवर्स दैट ITC. BP पॉइंट आपने क्या होता है वो तो बता दिया, बट कैसे कैलकुलेट होता है वो नहीं बताया है. और इंडिफरेंस पॉइंट आप बता नहीं पाए. 2 डिसीजंस के बीच में जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं उसको इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं, अगर आपको 2 ऑप्शंस में से डिसीजन लेना हो तो ये चीज़ थी. BRS डिफरेंसेस आपने हाफ करेक्ट बताए, 50% 50% नहीं. और HR वाले क्वेश्चंस आपने अप्रोप्रिएटली ठीक दिए, वो कोई नहीं है. कंफर्टेबल विथ नाइट शिफ्ट एंड रिमोट एरिया में आपको बोलना पड़ेगा एज आई एम फ्रेशर एंड आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ऑल, देयरफॉर आई एम रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन It's इंडिया. okay to या मतलब हाँ बोलना ऐसे ठीक है फटाफट ना से यस सर? नहीं, हाँ ठीक है. आपको कुछ साथ में बोलना भी है कि आप क्यों ऐसे कर सकते हो. बाकी कुछ क्वेश्चंस आपसे अकाउंट्स के पूछे गए, डेट इक्विटी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो कुछ ठीक थे, हाफ से ठीक थे, बाकी आपको सर बता देंगे. खुशी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 अप्रैल 2002. 2002. आपने लिखा है 2024. ठीक है ना, एक तो इसको करेक्ट कर लेना है ना. तो अभी अगर इसको देखा जाए तो आपके जन्म के 6 महीने हुए हैं अभी. तो इसके बाद अब हम बात जाते हैं अपने अकाउंटिंग पार्ट पर, है ना. एक तो BP वाला सवाल सर ने पूछा था, तो BP की कैलकुलेशन आपने इनकम स्टेटमेंट में बताया. सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे, फिक्स माइनस करेंगे तो EBIT मिलेगा. लेकिन अब BP निकालोगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या PV रेशियो से आप डिवाइड देंगे, है ना. अब अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला सवाल था गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर अगर कोई बेचा गया और सेल अप्रूव नहीं होती है, तो जब आप सेल करते हो तो एंट्री क्या बनाते हो कस्टमर को? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो रिवर्स कर दोगे एंट्री. तो सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और वो क्लोजिंग स्टॉक में आपका स्टॉक कॉस्ट पार्ट पे जुड़ जाएगा.
इसके बाद अनअर्ड इनकम और अक्रूड इनकम के बारे में बात करी थी मैंने। अनअर्ड इनकम बताओ असेट्स है कि लायबिलिटी? अनअर्ड इनकम, आपने ऐसी इनकम जो ओके अनअर्ड, हाँ कमाई नहीं आपने पर रिसीव हो गई तो लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में भी सर्विस देना बाकी है, तो उसकी एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्ड इनकम। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में क्या डिफरेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में कैश की पोजीशन को चेंज कितना हुआ है उसको पता लगाने के लिए, और फंड का मीनिंग होता है वर्किंग कैपिटल से। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस होता है वर्किंग कैपिटल के बीच का चेंज का पता लगाना, तो दोनों का पर्पस अलग अलग है। फिर मैंने बात करी थी डेट फाइनेंसिंग इज़ बेनिफिशियल क्यों इक्विटी फाइनेंसिंग, वो आपका ठीक ठीक था, पर परफेक्टली आंसर आपने नहीं किया था। डेट फाइनेंसिंग हम क्यों जनरली यूज़ करते हैं? क्योंकि इस पर टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है ना, तो आपका जो अल्टीमेट कॉस्ट है वो कंपेयर टू इक्विटी कम आती है। इसके अलावा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता है हुआ है कई बार, है ना, तो मतलब ये है कि वो डिस्काउंटिंग रेट है जिस पे इनफ्लोज आउटफ्लोज बराबर होते हैं, तो टेक्निकल पार्ट है ना। क्यों क्या कैलकुलेट किया जाता है आईआरआर? ताकि एक गिवन टाइम पीरियड में आप ये पता लगा सकें कि आपने अपना आप बीपी पर आ गए, मतलब आईआरआर वो रेट होती है जिस पे इनफ्लोज आउटफ्लोज बराबर हो जाते हैं, और आप अपनी प्रॉफिट कमा, जैसे 10 साल का प्रोजेक्ट है और 4 साल में आपने अपने इनफ्लोज आउटफ्लोज बराबर कर लिए तो बाकी 6 साल आप कमाओगे, तो आईआरआर उस रेट है, उस रेट से ये पता लग जाता है कि आपने एक गिवन टाइम पीरियड में आप बीपी पर आ जाओगे बिजनेस के। टर्नओवर रेशियोज़ नॉर्मल बात है, रेशियोज़ तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, है ना, टर्नओवर रेशियो ये सारी पता होनी चाहिए। तो खुशी फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये था कि टाइप्स ऑफ मीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो जनरल मीटिंग्स ठीक था, बोर्ड ठीक था, क्लास मीटिंग्स होती हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लास के जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो वो आपकी नॉर्मल जनरल मीटिंग में नहीं आएंगे, वो इक्विटी के लिए रहेगी, ठीक है, वहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं होते। सो आपको थर्ड वाला क्या बोलना है, क्लास मीटिंग्स, ठीक है। एजीएम की अगर हम बात करें तो एजीएम में ये होता है 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपकी लास्ट डेट 30 सितंबर, 180 डेज, बट आपको मंथ्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। सो वो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जो मैक्सिमम गैप रहता है दो मीटिंग्स के बीच में दैट इज़ 15 मंथ्स। लेकिन अगर 15 मंथ्स अगर लास्ट मीटिंग आपकी हुई है तो नेक्स्ट जो मीटिंग है वो विद इन 15 मंथ्स हैज़ टू बी कन्वीन्ड, तो वो आपका अब डेज़ वाला ही रह गया। तो दो कंडीशंस होती हैं एंड विच एवर इज़ अर्लियर हम वो लेते हैं। आईबीसी की हम बात करें तो एक आपका एनसीएलटी जो रिप्लाई था वो करेक्ट था, वो कंपनीज के केस में होता है, कॉर्पोरेट्स के केस में। एंड सेकंड जो इंडिविजुअल्स वाला होता है दैट इज़ डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सो वो आपका रहेगा, बाकी ठीक था। ओके, थैंक यू खुशी। अच्छा, सीवी में आपको कुछ और एडिशन करने, कुछ चीज़ें है ही नहीं आपके सीवी में। पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स नहीं है आपकी सीवी में, हॉबीज़ नहीं है एडेड, पर्सनल डिटेल भी एडेड नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है सीवी में, तो वो आपको ऐड ऑन कर लेनी है। यहाँ से थोड़ा सा आपको फॉन्ट कम करके तो इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा एक पेज में। तो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, हॉबीज़ और पर्सनल डिटेल्स आपको कुछ यहाँ पे मेंशन करनी है, लाइक फादर्स नेम और सिटी, दो चीज़ें एटलीस्ट ज़रूरी होती है इसके अंदर। ये सिटी यहाँ आ गई है तो पर्सनल डिटेल में इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है ज़्यादा, बट ये दो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ओके सर।